Approaches of Working Capital Management. Financial Management, Module 146. Working capital, as we discussed earlier, is that amount or that portion of capital which is used to operate or run a business. Working capital is like blood in the body. That if blood is not circulating in a body, we say that the body is dead. So if in a business we do not have working capital which actually circulates in a business, so we say that this business is dead. So to continue a business, to operate a business, and then later on to make it grow further, we need to have working capital. But the question is that how much working capital should a business organization have? यानी हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए? क्या हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा तो ये अच्छा है या बुरा है? एंड व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ हैविंग वर्किंग कैपिटल more than our requirement or less than our requirement? How can we manage this working capital? This is the topic of this module. Here we'll talk about the basics of the three major approaches of working capital management. हम यहाँ पर इन तीनों approaches का एक introduction देखेंगे, and later on in the next modules we will talk about these three approaches one by one in more detail, and we will see that how each approach of working capital management actually affects a business. So let's begin with the first approach, which is called the hedging approach of working capital management. Hedge is a protection which is generally there around something, some area. So this term hedging actually used as protection, protecting something against something. So जब हम hedging approach of working capital की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम कुछ रिक्वायरमेंट को कुछ ख़ास तरीके की फाइनेंसिंग से मीट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर hedging a certain requirement with similar kind of financing instrument. यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आ रही हैं. पहली बात जिसे हम कह रहे हैं रिक्वायरमेंट, द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड द सेकेंड थिंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम परमानेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं. यानी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, we always need that amount of working capital in our business. यानी उससे नीचे हम नहीं जा सकते. अगर हम जाएंगे तो हमारा बिजनेस उससे adversely affect होगा. And we have got certain requirement which is called a temporary requirement of working capital. यानी in other words हम उसको seasonal requirement भी कह सकते हैं. यानी ये requirement किसी वक्त पर मौजूद होती है और किसी वक्त ये वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड नहीं होता. अब दूसरी तरफ आइए, यानी इस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी हैव टू हैव फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर मॉड्यूल्स ऑफ दिस कोर्स दैट कैन बी थ्रू equity और debt. Equity is always long term financing because कभी भी equity चंद महीनों और दिनों के लिए जनरेट नहीं की जाती. बट डेट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. सो जनरली वी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल थ्रू द डेट. नाउ if the debt is long term and we have got on the other side some permanent requirement of working capital and we are matching it with the long term financing, यानी जितनी हमारी permanent या long term requirement है वर्किंग कैपिटल की, उतनी ही हम अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जनरेट करते हैं और जितनी हमारी टेम्पररी या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है
उतनी ही हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जनरेट करते हैं, तो ऐसी वर्किंग कैपिटल अप्रोच को हम हेजिंग अप्रोच का नाम देते हैं। हम आगे चल के इसको डिटेल में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कॉस्ट में और उससे प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ता है। बट लेट्स एट द मोमेंट मूव फॉरवर्ड to the second approach of working capital management. This is conservative approach of working capital management. Conservative in the sense that we try to have enough amount of financing so that we do not run short of financing. यानी इस अप्रोच के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास फाइनेंसिंग हमारी ज़रूरत से कभी कम ना हो, अगर ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। So what we do is that we make a blend of long-term and short-term financing for permanent and temporary requirement of working capital in a way that we increase the proportion of long-term financing and we reduce the proportion of short-term financing. यानी conservative approach में हमारे पास long-term financing ज़्यादा होती है बनस्बत short-term financing के। Finally, the third approach of working capital management, which is called the aggressive approach of working capital management. Later on, we'll talk about it, that why do we call it aggressive approach? Because here aggression is in terms of maximizing our profits, in terms of utilizing our resources at maximum level. So in this approach of working capital management, which is the third approach, the mix of short-term and long-term financing is in such a way that relatively we have got lesser long-term financing and we have got more short-term financing. यानी अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को जिसमें हमने 3 अप्रोचेस का जिक्र किया है, तो हेजिंग अप्रोच में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को अपनी टेम्पररी और परमानेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के मुताबिक अरेंज करते हैं। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को ज़्यादा हासिल करते हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को कम, और इसी तरह अग्रेसिव अप्रोच में उसका उलट है, यानी हम ज़्यादा इन्हिसार शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे करते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को रिड्यूस कर देते हैं। अगले मॉड्यूल्स में वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हर अप्रोच का हमारे प्रॉफिट के ऊपर, हमारी कॉस्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है।